Hello there viewers and a very warm welcome to this week's Out and About. Pushti Parivar UK recently held a Patotsav Mahotsav for the local community, which started with a katha at Dhamecha Lohana Centre in London. संवृत श्री पुरुषोत्तम वदनानलावतार सर्वान्नाय संचार वैष्णवान्नाय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिकार्पित साम्राज्य भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्री राजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगद्गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते तराम विजयते तराम विजयते. Very proud to say that we've got Samu Sapta Srimad Bhagavat, which is very expensive to do if you do individually. But our Guru said, let's make it commonly, get everybody involved, and what we're going to do is get everybody involved in such a little amount, and they can benefit what they can do individually. So today we have got a spiritual disclosure, and it's amazing topic. Everybody understands, and we are proud to be involved in it. The main thing, the purpose of this is to bring all the youngsters. We have a lot of youngsters offering seva, doing all sorts of help. And the reason we do this community work is that when we have a center, everybody has a purpose to go there. So today we are part of that as well, and the youth are so much excited. Now they were in English, but we are trying to get translators to also translate the lectures, which will be in our upcoming programs. So I'm very proud of this the event, because a lot of people are attending. We have a full house today, completely packed, because that means we're doing something amazing. Adharam madhuram vadanam madhuram nayanam madhuram hasitam madhuram hidayam madhuram gamanam madhuram madhuradipade rakhilam madhuram. Vajanam madhuram charitam madhuram vasanam madhuram valitam madhuram chalitam madhuram भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते राखिलं मधुरम्. वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपते राखिलं मधुरम्. गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते राखिलं मधुरम्. મધુરાષ્ટકમ ઉપર એટલું અદ્ભુત પ્રકૃતિ કે જે પ્રકૃતિનું સંગીત કહીએ, ગાયકી કહીએ, નૃત્ય કહીએ, એક જ શબ્દ યાદ આવે, મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ. અને એ જ દર્શન એ કૃતિમાં થયું. અને ભારતીય વિદ્યાભવનના એ વિદ્યાર્થીઓ છે, અને ખરેખર આજે આપણી સંસ્કૃતિને જીવંત આપણે જોઈએ, આપણી વેશભૂષા, આપણી પરંપરાગત એ નૃત્ય શૈલી, આજે એ ભારતીય વિદ્યાભવનથી એનો પ્રચાર અને પ્રસાર થઈ રહ્યો છે. આપણા બાળકોને પણ હું અનુરોધ કરું છું કે જ્યારે સમય મળે તો ત્યાં જઈને આપણી સંસ્કૃતિને જાણવાનો પ્રયત્ન જરૂર કરવો જોઈએ. आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आप इतने सुंदर रूप से जो भी उत्तम कार्य हो रहे हैं, सत्कार्य हो रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचा रहे हो. ये बहुत बड़ी सेवा आपकी है. और आपने अभी बताया कि इतने 30 वर्षों से जब ये क्रम चल रहा है, ये वास्तव में स्तुत्य है. तो यहाँ आने का जो मुख्य प्रयोजन है, वो मुख्य 2 प्रयोजन हैं.
अपनी संस्था पुष्टि परिवार यूके के माध्यम से प्रतिवर्ष यहाँ पे एक ज्ञान सत्र का आयोजन होता है कि जिसके अंदर आज लोगों को आवश्यकता क्या है। कहते हैं ना कि जब कहीं अकाल पड़ता है या फ्लड आता है तो ऊपर से फूड पैकेट डाले जाते हैं, लेकिन आज ज़रूरत होती है थॉट पैकेट्स की, कि अच्छे विचार, शुभत्व के विचार, पॉजिटिव विचार लोगों को प्राप्त हों और वो अपने स्क्रिप्चर्स के अंदर हैं। और ख़ास करके अपने स्क्रिप्चर से आज का यूथ कैसे कनेक्ट हो, ये उद्देश्य मुख्य रहता है। और इसलिए अलग अलग ग्रंथों को लेके अपन प्रतिवर्ष यहाँ पे एक आयोजन करते हैं जहाँ 7 दिन तक सभी लोग अपने परिवार के संग आते हैं और आके एक एक ग्रंथ का दर्शन करते हैं। सुंदर उत्सव होते हैं, लेकिन इस बार 7 दिन की एक कथा तो है और उसके संग संग 17, 18 और 19 में यहाँ पे एक श्रीनाथ जी की हवेली का अपन पाठोत्सव करने जा रहे हैं कि जो पुष्टि परिवार यूके के तत्वाधान में होने जा रहा है। और वहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन का लाभ, श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रारंभ, नूतन प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये द्विविध उत्सव है, प्रभु की लीला का श्रवण और प्रभु के दर्शन दोनों का। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। सभी भाव से कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। भाव से I'm so happy that I have been invited to come to this very special event, Pushti Parivar event, wherein so many people are sitting and listening to the lecture or upanyas by Guruji and Yadunath ji. And in such a beautiful way, he is bringing the very essence of our ancient scriptures, the Bhagavat, the story of Krishna. These are the things which are very essential for our little children to come and know more about our culture. The more we attend such events, the more culture-oriented we become and the more established our culture and our Vedic principles in this part of the world. It's so very important, and our Gujarati friends and people in the community, they are doing such a wonderful, wonderful job in organizing such huge events. In the Bhavan, we can take only a maximum 300 people. Here, look at the number, the way people are coming with so much devotion and being part of this event. It just inspires all of us, and I hope this continues for a long time to come with our people. कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां बर्हापीडम्. So this is a very fantastic function that we are organizing here at Damecha Loana Center. This is the third year in consecutive year that we are having this function, and we are blessed. We are blessed that this kind of functions are being held at Damecha Loana Center, and long may it continue. सबसे महत्व की वस्तु है कि आज यूथ को जो एक मिसिंग पॉइंट है वो है एक कनेक्शन। आज परिवार के अंदर दशा ये है कि माता पिता उसे महंगे महंगे फ़ोन दे देते हैं, लेकिन उससे कम्युनिकेशन करते नहीं हैं। हम उसे महंगी घड़ी दिला देते हैं पर उसको टाइम नहीं देते, और ये वस्तु सबसे ज़्यादा मिसिंग है। और कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जब आज कोई अपना नहीं होता,
कोई ऐसा नहीं होता जिसके आगे वो शेयर कर पावें, और तब दूसरी जगह कंफर्ट ढूंढते हैं और इसलिए ड्रग्स के अंदर चले जाते हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो जब प्रभु की कथाओं का और प्रभु की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो अंदर से एक फेथ जनरेट होता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा सुनने वाले मेरे प्रभु मेरे पास हैं। जीवन के अंदर कोई भी कठिनाई होगी तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे प्रभु मेरे पास हैं। और कहते हैं ना कि सबसे बड़ा हीलिंग पावर यदि किसी में है तो वो अंदर के फेथ में है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। More from this Mahotsav, but after this very short break. Welcome back to Out and About. In this part of the program, we take you to Sudbury Haveli, where Pushti Parivar UK celebrated a grand Patotsav. Today, in normal word, we can say કે આજે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા છે સ્વરૂપના, પણ in પુષ્ટિ માર્ગ we say પુષ્ટાવાના છે ઠાકોરજી. So આજે પુષ્ટા છે, અત્યારના જયશ્રી પધારશે અને તિલક થશે ઠાકોરજીને અને નંદ મહોત્સવ થશે, and we have VIPs coming to visit this place, and lots of devotees are going to join in today. We're going to make most of this day because after a long time, this Haveli is being turned into a Pushti Marg Haveli, and Jayashri will explain more and more. Listen, you can hear the excitement in the background. It's fantastic, and we're not underway yet. So once things get started, I think they'll be a lot calmer. I think people will be thinking much more spiritually. At the moment, everybody's excited, they're gossiping, they're talking about what's going to happen. But then we'll get some really serious teaching, and that I think will then be at the heart of what the community is here.
say thank you to Sir Barry Gardner. He's a member of the Parliament for Grants. Thank you for taking your time out and being a part of the celebration. It means a lot to us. We will need your support. And we'd like to welcome you from Pushti Parivar UK as well. Big clap, please. આજના આપણા અતિથિ એવા સર બેરી મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ of Brent. So first of all, we welcome you on behalf of all Pushti Margi Vaishnav Samaj that you spare time for us today. And there are two types of people in this world. First, those who are selected, and other, those who are elected. So now we can see the both thing in you. Those who are elected by the people go to the parliament, and those who are selected by the Krishna come to his temple. એ જ રીતે અહીં ઉપસ્થિત આજના બધા જ ઉત્સવના નિમિત્તે પ્રભુના ઉત્સવની વધાઈ મેળવવા માટે આવેલા મારા આત્મીજનો, સૌથી પહેલાં તો આપણા શ્રી ગોવર્ધનધરણ શ્રીનાથજીની હવેલીના આ પ્રથમ પાટોત્સવની આપ સૌને ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાઈ. ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાઈ. हर भरकत मौंद मौंद आज ब्रज गोकुल में अनौंद बंदी जन सब धारे ठाने हित दान बाबा नौंद कृष्णदास की आशा पूरी श्री गोकुल के चौंद बधाई को दिननी को आज बधाई को दिननी को नंद करनी जसुमति जायो है नंद करनी बोल सिलारी जायो है. I'm proud to be here when I see so many people here, and it's so nice કે આજે આવો મોટો પાટોત્સવ ઉજવાય છે. અને ખરેખર આની જેણે પણ મહેનત કરી હોય ટ્રસ્ટીઓને, બોર્ડ મેમ્બર્સને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને વિશ યુ ગુડ લક. અને અમારા મંદિરનો કોઈ પણ જાતનો સપોર્ટ જોતો હોય તો વી આર ઓલવેઝ દેર ફોર યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. बोल श्री वल्लभाधीश की, बोल गोपाल लाल प्यारे की जय. बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो. आनंद भरे नंद जो के रानी फूले अंगन समाये परमानंद दास दियो सर बहुत न्योछा वर पाई सब मिल मंगल गावो माए मंगल गावो माए सब मिल मंगल गावो माए सब मिल मंगल सब मिल मंगल सब मिल मंगल. बोल गोपाल लाल प्यारे की वाह 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 वाह. बैरन दान मंगाए बैरन दान मंगाए कंचन झरबर खाए हे पर फागन तूरी करे मुरादे पूरी जन्म जन्म गुण गावे ना करी दर्शन पावे ना करी दर्शन पावे ना करी दर्शन पावे ना करी दर्शन पावे. बोलो बधाई हो बधाई
importance of this Haveli is that this day and age, the youngsters are drifting away. So we want every center should be built like this in every area where they feel connected, because the reason they feel connected, if they have something to say or get involved, there's a lot of mental health issues going on. If they want to come and just meditate here, we're going to have a lot of classes. These centers should be built in every single town, because they feel that they're Hindu, they feel they're connected, they feel they can offer some, if they're professional digital services, computer, they can offer help, seva to progress more in Haveli, use their ideas. This is a center. They can come and join in, give their ideas to us, make it a bit modern, make it a bit approachable for the younger generations. So people like those people who are talented, please come and join us. Give us that opportunity to give you that platform, and you can share the ideas. नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की हे जवानन को लड्डू पेड़ा वृद्धन को लापसी हे जवानन को लड्डू पेड़ा वृद्धन को लापसी जवानन को हाथी घोड़ा वृद्धन को मोरपी जवानन को हाथी घोड़ा बुढ़न को पालकी जवानन को हाथी घोड़ा वृद्धन को पाल की हे नंद बाबा लड्डू दो लड्डू दो लड्डू दो हे नंद बाबा लड्डू दो हे लड्डू दो लड्डू दो लड्डू दो लड्डू दो हे लड्डू दो लड्डू दो लड्डू दो लड्डू दो बधाई हो बधाई हो Our heartiest congratulations to Bhavna Lakhani, her entire team, and of course all the Vaishnavs for that wonderful Utsav. That's all we've got time for in this week's programme, but as always viewers, we're back on your screens again next weekend. So until then, take care, bye bye.